हेलो, मैं हूं आपके साथ सारा चौहान और मैं हूं आतिफ कुरैशी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूहान चाइना से स्टार्ट होने वाला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। और अगर पूरी दुनिया से अगर आपको बताया जाए कि कितने लोग इफेक्टेड हैं, तो लगभग अब रेशियो बताई जा रही है 2,40,119। इसके बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली जो कंट्री है वो सायरा और आतिफ आप जानते हैं कि वो इटली है। और इटली में चाइना से भी ज़्यादा डेथ टोल बताई जा रही है। मध्या, एक वक्त वो था जिस तरीके से 2019 में चीन के वुहान शहर से ये निकला कोरोना वायरस, पूरे देश को, पूरी दुनिया भर को चपेट में ले लिया। अब पूरी दुनिया भर चपेट में है और एक तरह से देखा जाए तो जो केसेस जो हैं वो चीन से नहीं आ रहे हैं। आतिफ, एक तरीके से हम देखें तो चीन अब थोड़ा संभला हुआ लग रहा है क्योंकि जो बाकी देश हैं दूसरे ममालिक में चले बिल्कुल। बल्कि जो आज, अगर आप करेक्ट करें, जो आज मुझे सुनने में आया है कि चीन में जो भी है, कोई भी केस जो आज के दिन कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो क्या ये सच है? ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर बहुत सख्ती बरती जा रही है। अब वो इन्फेक्शन जो है, कोरोना वायरस जो है, वो वहाँ से निकल गया है, पूरे दुनिया भर में ट्रैवल कर रहा है। मेरे पास कुछ अपडेट, जैसा आप इटली का अपडेट दे रही थी मध्या, मैं आपको अमेरिका का अपडेट देना चाहती हूँ। अपने दर्शकों को हम लोग अमेरिका का अपडेट मैं देना चाहूँगी एक बार। अगर मैं बात करूँ न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में 1300 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अगर मैं आतिफ न्यू जर्सी की बात करूँ तो अगर 2 दिन पहले की बात है, 89 यानी 89 जो केसेस हैं वो सामने आए थे और अब ये लगातार बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही वेस्ट वर्जीनिया में भी ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं मध्या। बिल्कुल, ओवरऑल 50 स्टेट्स अमेरिका की जो हैं वो इस वायरस की लपेट में आ बिल्कुल चुकी हैं। चपेट में हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे नैरो डाउन करते हैं और अगर मैं यहाँ पे बल्कि आपको बताना चाह रहा था कि स्टेट्स की हमने बात की, ह्यूस्टन की जो अभी कुछ देर पहले अपडेट जो है मदिया और सायरा, आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी जो आई है रिसेंटली, जो ऐड हुए हैं इसमें, ये 64 से 77 हो गए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। जी। और जिसमें हैरिस काउंटी में 24 हो गए हैं, 19 थे, 24 हुए हैं। अभी जो कुछ देर पहले अपडेट आई है, ह्यूस्टन में 10 से 11 हो गए और फोर्ट बेंड काउंटी में 19 केसेस जो है वो रजिस्टर हो रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले, जी बिल्कुल, जो एक डेथ हैरिस काउंटी में पहली जो रिपोर्ट हुई है और जो उनकी जो एज है वो 80 to 90 जो है वो बताई जा रही है। बिल्कुल सारा, ये हर जगह से जहां से भी ये डेथ टोल सामने आ रही है, अगर हम एज रेशियो को पर्टिकुलर देखें तो हमें 70 से अबव और 90 से नीचे दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि इम्यून सिस्टम 70 से अबव लोगों का वीक होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा जल्दी इस बीमारी की पकड़ में आ जाते हैं। इसीलिए WHO लगातार यही बात कह रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो सबसे जल्दी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 से अबव हैं, या बच्चा जो है, आपके घर में अगर बच्चे हैं वो 10 साल से अगर उनकी उम्र कम है तो वो सबसे ज़्यादा उन पर अटैक कर रहा है। तो अगर घर में बुजुर्ग हैं, अगर घर में बच्चे हैं, किड्स हैं, तो उनको बहुत ख्याल उनका रखने की ज़रूरत है। और इसी तरह के केसेस आ रहे हैं आते। अब जैसे कि हमने US और ओवरऑल ग्लोबल हम पर्सपेक्टिव से बात करें, तो आई वुड लाइक टू शेयर द रेशियोज ऑफ ह्यूस्टन पर्टिकुलर कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो अगर हम ह्यूस्टन की बात करें तो हैरिस काउंटी में 19 केसेस हैं और ह्यूस्टन में पर्टिकुलर 10 केसेस हैं। फोर्ट बेंड काउंटी से 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करूंगा। ये जो आप कह रही हैं, अभी जो अपडेट, अभी जो मैंने कुछ अपडेट आपको थोड़ी देर पहले, ये बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल जो है आप कहें मिनटों के हिसाब से या घंटों के हिसाब से तादाद बढ़ रही है। तो ये जो आप कर रही हैं, जो बिल्कुल अभी जो आप बिल्कुल 19 कह रही हैं, ये अब 19 बढ़ के 24 हो गए हैं। अभी जो ह्यूस्टन हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जी बिल्कुल, ह्यूस्टन हेल्थ डिपार्टमेंट की जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो 24 हो गए हैं और 11 ह्यूस्टन में और फोर्ट बेंड काउंटी में 19 हो गए। क्यों आपको पता है ये बिल्कुल जो है। अच्छा आतिफ, मुझे आप बताएं कि आप लाइव कवरेजेस करते हैं, आप आउटडोर कवरेज कर रहे हैं, आप क्योंकि कोरोना फैल रहा है तो आप भी आउटडोर कवरेजेस कर रहे हैं। आप पर्टिकुलर बताइए कि ह्यूस्टन सिटी में क्या कुछ प्रिकॉशन जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर जो कवर भी की, मैं लाइव भी था, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज के अप्रूवल के बाद जो है, ये यूनाइटेड मेमोरियल टेस्टिंग सेंटर जो कि लोकेटेड है 510 वेस्ट टिडवल पर, यहाँ पे जो है पहला टेस्टिंग सेंटर कोरोना वायरस के लिए ड्राइव थ्रू जो है वो ओपन हुआ आज सुबह 10 बजे। और यकीन करें, जब मैं वहाँ ड्राइव करके जा रहा था तो उस पहले 1 माइल्स तक लोगों की कतार, गाड़ियों में बैठे लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे मजीद मैं बताता चलूँ कि ये आज 8 बजे तक जो है वो रहेगा और कल सुबह, ये सुबह 8 बजे शुरू होगा, कल फ्राइडे को 6 बजे तक। लेकिन जब नेक्स्ट वीक से ये कंटिन्यू होगा सुबह 8 बजे से लेके मंडे टू फ्राइडे
ये टेस्टिंग जो है आप ड्राइव थ्रू जो है इस लोकेशन पर यूनाइटेड मेमोरियल टेस्टिंग सेंटर जो है वो लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, आप ये विजुअल भी देख सकते हैं इस वक्त जो है टीवी की स्क्रीन पर। ये टेस्टिंग सेंटर जो है यूनाइटेड मेमोरियल टेस्टिंग सेंटर जो लोकेटेड है 510 वेस्ट टिडवल पर, यहाँ पे ड्राइव थ्रू जो है वो टेस्टिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए जो आज ओपन हुआ है। आज उसका फर्स्ट डे था और ये जो है कंटिन्यू करेंगे कल और अगले मंडे से फ्राइडे तक सुबह 8 से लेके 8 बजे तक जो है ये जो है वो कंटिन्यू। अनदर क्वेश्चन, ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी लोग ड्राइव थ्रू के जरिए आ रहे हैं टेस्टिंग कराने के लिए, लेकिन पर्टिकुलर प्रायोरिटी पर उन लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं जिनको बुखार है, जिनको सिम्टम्स कुछ कफ या स्नीजिंग के ज्यादा। इज इट ट्रू कि? जी बिल्कुल मदिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि सुबह जब वहाँ पे मेयर टर्नर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली थी, वो भी उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की लोगों से, क्योंकि इतना खौफ इतना डर है लोगों में कि हर किसी को भी खांसी आ रही है, किसी को भी हल्का सा कुछ तबीयत ऐसा नासाज होती है तो उसको शायद ऐसा लगता है कि शायद उसको कुछ इस तरफ जाता है। तो लोगों को उनका कहना था कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास इस वक्त सिर्फ 2000 जो है कैपेबिलिटी है टेस्ट करने की। तो वो फैसिलिटेट करना चाहते हैं उन लोगों को जो वाकई जिनको सिम्टम्स है मौजूद हैं या जिनको फीवर है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है इस वक्त। तो हर किसी का टेस्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जब जो लोग आ रहे हैं क्या डर है उनके दिल में अभी भी, क्योंकि लोग अभी भी बाहर निकलने से पहले कई बार सोच रहे हैं, क्या ऐसा है वाकई? बिल्कुल ऐसा है। देखिए डर तो पूरी दुनिया में, स्विट्जरलैंड की बात नहीं, डर तो पूरी दुनिया में है। एक आम बंदे की अगर बात करें हम, तो एक बंदा जब सुबह उठता है, सोशल मीडिया यूज करता है, फेसबुक या ट्विटर खोल के देखता है, तो उसको कोरोना वायरस की अपडेट नजर आती है। टीवी खोलता है तो कोरोना वायरस, व्हाट्सएप ग्रुप कुछ खोलता है तो कोरोना वायरस। हर जगह जब एक तो साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट हो रहे हैं आम जनता के, उसको जो है वो डर खौफ तो आप कह सकते हैं। अच्छा आतिफ, एक ये खबर भी है कि टेक्सास के जो गवर्नर है ग्रेग एबर्ट, उन्होंने स्टेट को आज इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर ही उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर तमाम होटल्स और मॉल्स को बंद किया जाएगा। अब तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर 10 से ज्यादा लोग कहीं पर भी होंगे तो एक भारी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि 10 से ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं आना है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन से बढ़कर अब इसे लॉक कर दिया गया कि अभी ये एक रूल बन गया और इसको फॉलो करना। और नेशनल इमरजेंसी यही इसका मतलब है कि जो भी बोला जा रहा है उसको आप सख्ती से फॉलो करें। देखिए जिस तादाद से और जिस टाइमिंग से केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा स्टेप है बिल्कुल, और ये इस तरह का स्टेप मेरे पर्सनल ओपिनियन में ले लेना चाहिए था पहले, और मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। एक अच्छा स्टेप है। रेस्टोरेंट बंद हुए हैं, दूसरी तरफ लोगों को लॉस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी के जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज इसी बात को मैं आगे लेकर चलूंगी। सारा आप बताइए कि जैसे कि लॉकडाउन हो रहा है, होटल बार्स हर चीजें बंद हो रही हैं, बिजनेस डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप बताइए, आपने भी कल के रोज काफी लोगों से जो बिजनेस अपने चाहे छोटे बिजनेस या बड़े उनको से बात की, आप कुछ लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। लोगों ने आपको क्या बताया, क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी है, कितने डिस्टर्ब है वो लोग? दरअसल लोग बाहर निकल रहे हैं जिनके छोटे काम हैं या जो बड़ा बिजनेस नहीं। बिल्कुल, मैं एक छोटे से सैलून में, हालांकि वो छोटा सा सैलून था, लेकिन वहाँ पे वो लेडी जो है, जो वहाँ की मैनेजर थी, वो वेट कर रही थी लोगों का। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, जो 40 जो एबव है जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मदिया, एक मुझे लगता है कि अब जाना पड़ेगा लाइव के लिए हमें। बिल्कुल, और अभी हम आपको देखने वालों को दोबारा से लाइव लिए चलेंगे। मेयर जो हैं सिल्वेस्टर टर्नर, वो एक बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। दोबारा आएंगे, दोबारा से हम करेंगे, और इससे पहले कि वो कोरोना से रिलेटेड कुछ अपडेट्स दें और प्रेस ब्रीफिंग में डिटेल से डिस्कस करें। इससे पहले भी हमने देखा था कि वो जब प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्होंने इनिशियली यही प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि स्टेट की जानिब से जो भी फंडिंग की जाएगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो बिजनेस लॉस हो रहा है उसको समहाउ किसी भी तरह से हेल्प किया जाएगा। एक बार फिर से सारा कंटिन्यू कीजिए कि किस तरह से बिजनेस का लॉस हो रहा है। बिल्कुल, बिजनेस का लॉस अगर हम बात करें तो दुनिया भर में कितना नुकसान हो रहा है। आप शेयर मार्केट को देखिए, गोते लगा रहा है शेयर मार्केट, खुलते ही धड़ाम हो जा रहा है। चाहे वो इंडिया की बात कर लें, चाहे हम दूसरी देशों की बात कर लें, यूके की बात कर लें, यूएस की बात कर लें, जो कोलैप्स यहाँ पर हो रहा है, धड़ाम हो रहा है एकदम से शेयर मार्केट। और है सबसे ज्यादा आप देखिए जो एयरलाइंस है वो बंद हो गई हैं, छुट्टी
को भेज दिया गया है। और लोग घरों से काम कर रहे हैं, घरों से काम कर रहे हैं, घरों से हर कोई काम नहीं कर पा रहा है, घरों से हर कोई नहीं कर पा रहा है ना। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया, कल में छोटी छोटी मार्केट्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वो लोग क्या करें? उनके पास कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, कोई खरीदार नहीं आ रहा है, उनके पास कोई जिस तरह से मैं सलून में गई तो वहाँ की जो मैनेजर है वो वेट कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मेरी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से अपने अपने बच्चों को पालूं। ये सिचुएशन देखने वालों को भी आई एम श्योर पता है कि 3 अप्रैल तक इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और होपफुली 3 अप्रैल के बाद सिचुएशन कुछ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि सरतोड़ कोशिशें पूरी दुनिया में की जा रही है कि किसी तौर भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को एज सुन एज पॉसिबल बनाया जा सके, और कुछ इस हवाले से एक्सपेरिमेंटेशंस भी शुरू हो गए हैं। आतिफ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 3 अप्रैल तक हो जाए, होप अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन जो सिचुएशन जितना टाइम चाइना को लगा, तो उस हवाले से और बाकी सिचुएशन जिस तरीके से, उसके बाद ईरान, इटली, और चौथे नंबर पे अमेरिका के स्टॉक की भी बात कर रही थी, इंडिया और पाकिस्तान की भी आप बात कर रही थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की स्टॉक बल्कि दुनिया के स्टॉक के अमेरिकन स्टॉक के देखने के बाद बहुत इफेक्ट करती हैं। तो अभी मैं जब पाकिस्तान भी बात कर रहा था कुछ जानने वालों से, तो वो भी वहाँ पे बात कर रहे थे, हालात इतने, क्योंकि जब देखते हैं वो सुबह प्रेसिडेंट ट्रंप की एक स्पीच होती है या नेशनल इमरजेंसी के बाद, या स्टॉक जब खुलती है और रेड उनको एक लाइन जो है वो नजर आती है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल जो है बहुत मायूसी जो है वो देखने में मिल रही है। बल्कि यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा साहिरा, आप तो इंडिया दिल्ली से हैं, वहाँ क्या सिचुएशन है आपके, वहाँ क्या केसेस के सामने आए? अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे, हम एक बार फिर से देखने वालों को लाइव लिए चलेंगे। इस वक्त मेयर जो हैं वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। But that's where I want the focus to be for today, and then after we hear from some of them, then I will come back and specifically talk about testing. So first up, let me bring up the first daughter, Ashley Page Turner, with her message to millennials and that young group. Thank you, Daddy. Mayor Turner. And even though there are only a few millennials on this stage, I know a lot of us are millennials at heart. So I brought a few of my younger friends with me today because we have an important message to share. Like everyone else, millennials have been paying attention to the COVID-19 pandemic and the City of Houston's work to mitigate the spread to avoid overwhelming our healthcare system. But as the younger generation, we have felt a false sense of security because we believed only older people were at risk of getting sick with the coronavirus. But increasingly, United States health officials have warning that millennials could also be at serious risk of complications from the novel coronavirus. Scientists previously thought young adults were largely spared, but some young people across the world, the U.S. and in our region, are and have the potential crowding beaches or hanging out and not practicing social distancing. I asked to gather some young people from across Houston today to share this important message. Remember, most people who become infected generally experience only mild symptoms, such as cough and fever. There are some of my young friends. So you might appear healthy, but expose your older relatives or friends who have underlying medical conditions. And I will say this is a point in time where we do not want to be selfish. We don't want to only think about our social norms and being out amongst ourselves. I think this is the only time where we will not get the side eye for being on social media instead of being more active. And so let's take advantage of that because we really want to make sure that we protect not just ourselves, but also our grandparents, our aunts and our uncles, our parents, and anybody else that's close to us. So millennials, we also need to practice healthy hygiene habits. That means wash hands frequently with soap and water for at least 20 seconds. Use hand sanitizer when you can't wash your hands. Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. Cover your coughs and sneezes with a tissue and throw the tissue away. If you don't have a tissue, use the elbow of your sleeve. Don't use your hands to cover coughs and sneezes. Avoid close contact with people who are sick, especially if you are at higher risk for coronavirus. Get plenty of rest, drink plenty of fluids, eat healthy foods, and manage your stress to keep your immunity strong.
We're naturally, I think, a very compassionate and conscious generation. I think this is our time to put our compassion into action and to do our part as well to help mitigate this disease. So I want people my age and younger to take this seriously. With me today is Michael Conklin. There's Mike. Program Director of Evolve Houston, Christian Aguirre, a University of Houston student, and Scott Packard. Thank you so much, Mayor. Thank you. To my millennial peers out there, I know that this is seen as something that really wouldn't impact you because it's just been affecting older people, but we're starting to see that that might not be the case. And whether this impacts you directly or not, you don't want to be the person to give this to the people that you love. And let's be honest, we were born in the age of social distancing. This is just like any other day for us, right? So let's all just take a beat, watch Netflix, order out from your favorite restaurants. It'll be okay. We'll get through all of this. Thank you. To echo those sentiments, I just want my millennials to understand that you can be a leader. Be the first one to take those preventative measures. Be the first one to separate yourself. Let your peers know how important it is, and once they see you taking that step, they will too. So let's be in this together. Thank you. Thank you. Well, I'd like to just share a message with my fellow millennials, and I'd like to start off by saying, you know, I've been hearing a lot about how millennials need to step up, and I agree. I think everybody needs to step up. It's not just millennials, okay? I think that what I've seen on TV, I see people of all ages who are adhering by the guidelines, but this is really important. And millennials I am 22 years old and a student at University of Houston. I recently came back from spring break. I went to Disney World in Orlando, Florida. I didn't think it was a big deal to go. Now, seeing the increase of cases and how fast it can be spread, I've come to realize that this is a big deal and that it takes all of us to stop the spread. For a lot of college students like myself, our classes are going online, which might mean more free time to hang out with friends at the park, more free time to hang out with friends at the dorms, more free time to hang out at home. However, I encourage everyone to stay home and practice social distancing. I mean, we all love being on our phones, so let's be smart and take advantage of the resources that we have in our own fingertips, like FaceTime, Snapchat group calls, and the party feature on Netflix. Thank you. Thank you all very, very much, and I won't give you my age. I'm just right outside of that millennial age group. Tomorrow, Friday, the city of Houston will open one of 2 testing sites in partnership with FEMA. That will take place on tomorrow. The immediate focus will be on testing first responders and healthcare workers, but as we scale up, that will expand to others as well. And as you know, we've been approved for 4 sites in our region, 2 in Houston, 2 in Harris County,
but we will be setting up or standing up the first one on tomorrow, and then we will scale up as additional supplies are obtained. It will be a free testing site, but we do not have enough personal protection equipment, swabs and other equipment to test everyone. So the focus tomorrow will be on first responders and healthcare workers. The public has been very patient, and I want to thank you for your patience. And we are asking you to follow the rules. And I also want to thank other private testing sites that have taken place in our city. I thought I saw Congresswoman Sheila Jackson-Lee, so I certainly want to acknowledge her and her efforts as well. First, people will be given, in terms of the protocol, people will be given a website address to answer questions. They will connect with a nurse, given an authorization number to proceed to testing site. These sites are only for high-risk groups with symptoms that have been through a screening process. And people who show up who haven't been properly screened will not be tested. But these are people who have been showed some symptoms, have gone through the screening process, and then as we scale up over the next week or two, we will be able to do more. We are making some very tough decisions in the city as well as the county. I certainly want to acknowledge and thank County Judge Lena Hidalgo for her efforts and the efforts of the county. They have been a very vital partner in this entire operation. We are taking deliberate steps to protect the public and save lives. That is what this is all about. And it is also important to maintain a healthy attitude, which is a part of a healthy regimen as we deal with a crisis of this kind. We're all in this together. We're all in this together, and we'll come through it much quicker if we work with one another together. So that's why the focus for today has been on the millennials, because we need them. Quite frankly, we need each other. Mayor Pro Tem, Councilmember Robert Gallegos, he's a little bit younger than some of us, Councilmember Jerry Davis. We all need this millennial group. Councilmember Pollack, Councilmember Peck, the First Lady, Mike Christian, George Bunick. We are all interconnected. And so when we work together, we are able to come through it. So making some tough calls. I want to thank the community as a whole for your cooperation, for working with us, for not panicking. But this is a crisis in which we have to manage. I tell people all the time, we can't see what we are facing. So it's kind of hard to kind of get your arms around something that you cannot see. But what we do know is that when we work together, when we engage in social distancing, spacing, avoid large groups and crowds, we're able to slow down the progression. So as the weekend comes, I'm asking people just to kind of find a way to enjoy yourselves in a small group in this new normal that will be with us for several weeks, if not for several months. So thank you so very much. Now that's where I'm going to stop, and feel free if you have any questions to any of us millennials, and then these older folk here, feel free to ask anyone. And the Congresswoman, she's Millennial Plus. Yes. Well, we got some equipment that came in via a truck from the Midwest that came in today. And then the governor did provide some swabs that came in on yesterday. So in terms of the PPEs and some swabs, we have enough to stand up the testing center on tomorrow. But this is a problem all over the country. And so the president, they just introduced the defense. What do you call it? The defense. The defense. It is the Defense Production Act. Defense Production Act, which is causing people to manufacture and produce these PPEs in the numbers I think that we will need. So it's a problem across the country, and that's what is delaying us from standing up all 4 testing sites, right now. In addition to that is that, you got a lot of people who are coming wanting to be tested.
but you also have to have the labs that are able to evaluate and determine whether or not the swabs, the samples that they're getting are positive or negative. And that's also creating some delay. And so the City of Houston Health Department, for example, has brought in some additional equipment so that we can increase the number that we can do in-house, and we don't have to send them up to the CDC any longer. We can do it in-house. So we're all trying to increase our capacity on both ends. Testing, the PPEs as well as on the testing. The site tomorrow will be the Butler Stadium. That will be that site. And again, I want to remind people this, the emphasis for tomorrow as we stand it up will be first responders and healthcare providers. And then the way the protocol will be as we move forward is that we'll provide you with a website, and then you will go on that website and you'll answer some particular questions, and then immediately after that, you'll be placed in touch with a nurse, live nurse, and that person will ask a series of questions, and then you will be given an authorization number, and then you will proceed to the testing site. If by chance, for example, you don't have the ability to go online, then you will be given a number. We'll give you a number to call, and then we'll proceed from there. The first one tomorrow we'll stand up, and then we'll scale up, and then as the additional supplies come in, it's my hope that next week we can also bring those additional 3 testing sites online. So the whole goal is to ramp up, quite a bit over the next week or so. Well, that's a concern that, of course, the healthcare delivery system has been voicing for quite some time. With respect to PPEs, there are concerns on that end. With respect to the number of beds that are available, normally our hospitals are running at between 90 and 95% occupancy year-round. Okay, that is the primary reason why we are putting in these significant dramatic measures. Rescheduling or canceling major events, across the board. Restaurants, bars, clubs, all being affected. And the whole goal with all of those measures that's now taking place across the state, okay? And frankly, across the country, is to slow down the progression
of the virus, as we've said, to flatten the curve such that our healthcare delivery system is not over. Everyone is responsible and does his or her job in terms of not engaging in large crowds and things of that nature, then we don't have to get to that point. You know, I was pleased with what the governor did because that now applies the steps that we've already taken in Houston Harris County across the board. Because the reality is you can do it in this city and in this county, but if other cities and counties are not doing the same, then people are just traveling from one to the other. It has to be unified in order for it to be meaningful and impactful. And so now the same sort of guidelines, advisories that we've put out in Houston Harris County, Fort Bend, all of these counties in our region are now applied across the board. And that uniformity will benefit all of us, whether you're in rural Texas or whether you're in urban Houston. So let's just do our part. What I want to say to people, you don't want to put something in place and then people are rushing to the grocery stores because they're saying the city now is about to be shut down, because that was floating on social media. The city's about to be shut down, so we better go and buy up everything we can that can last us for the next 30 days. That defeats the purpose. We've got first responders and healthcare providers that need daycare, okay? The city, people are still calling because they have business needs. We still have to meet their needs. So let's just be responsible, and it's important for us to take very measured steps. And because it's important to, as I've said, we have to manage not only our physical presence being, but we also have to manage our emotions as well. Okay? So it's not just about the physical being, distance spacing, me from Mayor Pro Tem Martin, but it's also I have to manage my emotional and thinking as well. And that's important. So that's why it's important for us to have a good, positive attitude. And if we have a good, positive attitude, that too will help to keep us healthy. And then lowering the stress level. The anxiety is here. We're just trying to lower it a little bit. And I assure you that it'll help to keep you healthy. And then every now and then you just have to find a way to smile. You know, I know when my daughter saw me, I brought her joy. You see? So every now and then, even in stressful times, you just have to find a way to smile. Yes, sir. I know we're spread out there on the stage, but we've got a lot of viewers at home that are watching right now and talking about practicing what we preach, and they're concerned about the fact that perhaps we aren't spread out enough. The worries about that right now. What do you tell the residents? Well, we are spread out. This room was specifically built for us to spread out and to do this. And the reality is, look, information is valuable these days. If we don't provide you with the information, people will get the information from non-credible sources. But we specifically built out this room in order to have a press conference like this. This room is normally, it doesn't look this way. But we built this room out specifically to have the social spacing to be able to do what we are doing today. Okay? Just based on the question and the comment that the gentleman made about some people just not understanding and seeing it as real, if people still don't respond the way that they're expected to, is a lockdown on the table? Is that a possibility at all? And also, a second question, what kind of support is Houston getting after President Trump's FEMA reunion? Well, the support is coming in. I mean, just like tomorrow, there are additional supplies, additional personnel that are coming in to assist in this site, which is a FEMA site that's being stood up tomorrow. So that's very helpful. This is just a point in time. It doesn't matter. Quite frankly, it doesn't matter who you are. It doesn't matter what your party affiliation, race, color, creed, language, whether you're documented or undocumented. We're all in this together.
Every last one of us. This virus is not discriminating. This virus is not asking whether whether you're a native Houstonian or whether you just got here yesterday and you don't have your papers. It does not matter. And Houston has been through these, not this type of challenge. We've been through challenges before, just like Harvey. And in this city, we have all come together. So the only point that I would say, if we are responsible and we do collectively what everyone has been asked to do, then we can manage this without going to the far extremes, okay? We're trying to do everything we can to not go to the far extremes. Let's just be measured in our approach. And if we're measured in our approach and if we work together, we'll get through it. And the reason being, #Houston Strong. Okay, let me thank you all so very much. Let me thank all the participants. And then we continue to provide you with updates on where we are and what we're doing. Thank you. Appreciate it. वेलकम बैक। आप देख रहे थे मेयर टर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाने से पहले सर मैं आपसे पूछ रहा था इंडिया की जो है वो क्या सिचुएशन है, वहाँ पे कितने केसेस अभी तक सामने आए हैं या अभी तक कोई डेथ जो है वो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ पर केसेस भी सामने आए हैं और वहाँ पे जो नंबर्स हैं केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे स्कूल हो, सब कुछ वहाँ पर बंद है। नोएडा में 144 लगा हुआ है, यानी 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रुक सकते हैं और बड़ा डर की सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। रात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया था और साफ तौर पर लोगों को कहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ और हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं है मदिरा। बिल्कुल, और इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हेल्थ अथॉरिटीज लोगों को यही कॉशन करें कि अपने घरों तक रहें और सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें, इवन हाथ मिलाने से भी अवॉइड करें। और अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हैंड सैनिटाइजर को जरूर इस्तेमाल कीजिए और अपने हाथ बराबर धोते रहिए। आई होप एनटीवी ह्यूस्टन की ये फेसबुक लाइव आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप अपना फीडबैक हमें फेसबुक लाइव पर भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।